Good afternoon, everyone. I hope my screen is visible to all of you. Yes. Yes, sir. Yes, it is Okay. visible. Yes. Thank you. Okay. So, see, today we will discuss regarding the basics of structural engineering. So, if we see in the RCC building, basically, I am GS Wire, Ganesh Wire. Okay. So, basically, if you see the RCC structure, okay, first we will focus only on the RCC structure. So, if you see the RCC structure, so basically, we have to design some types of elements like slab, beam, column, and then footing. Okay, so these four elements, structural elements, are most important for the design point of view. And today's our session is related to design of slab. Okay, and if you see the slab, so basically slab is of two types. Okay, one way slab and two way slab. But that one way and two way slab is totally depend on some parameters, means how to decide whether whatever slab we are designing, that slabs are the one way slab or two way slab. That we have to first decide, and then we will focus on the reinforcement. So basically here I have mentioned three points. Okay, so on that basis, on these 3 points basis, we will decide whether that given slab is a one way slab or two way slab. Okay, just wait. Recording. Okay, recording is done. Okay. Okay. So first is Ly by Lx ratio. First we have to calculate the Ly by Lx ratios to decide the slab. Okay, and in Ly by Lx ratio, if your Ly by Lx ratio is greater than 2, so that particular span is called as a one way slab. Ly by Lx ratio is greater than 2, so slab is called as a one way slab. Now here in diagram we can see Ly by Lx ratio is greater than 2, it is one way slab. And where most important thing is what is mean by Ly and Lx. Okay, now if you see in this figure, now in this figure they have considered Lx is greater span and Ly is a shorter span. Okay, Lx greater span and Ly shorter span. But if you see as per the IS 456, okay, generally we will follow the IS code, means total guidelines for all the RCC structural elements are given in IS 456. So generally we are referring IS 456. Okay, and as per the IS 456, okay, as per the IS 456, our Ly should be longer span and Lx should be shorter span. Okay, Ly is longer span and Lx is shorter span. Okay, so that's why if we consider Ly as a longer span, so Ly by Lx ratio is greater than 2, it's one way slab, and Ly by Lx ratio is less than or equals to 2, it is two way slab. But now in this diagram we can see they have considered Lx is the longer span and Lx is a Ly is the shorter span. Okay, so just focus on the aspect ratio, means a longer span divided by shorter span, that ratio is greater than 2, means one way slab. And if longer span divided by shorter span is ratio less than or equals to 2, so that slab is called as a two way slab. So that is the main thing, means while designing any slab, first we have to calculate this ratio, and then as per that ratio we will decide whether that particular slab is a one way or two way slab. So second difference is the support condition. Okay, another difference is support condition, means generally in one way slab, so our slab one way slab is supported on two opposite side. Okay, whether two way slab is supported on all sides, means all four sides two way slab is supported, and one way slab is supported on only two sides. Okay, so if we see this type of arrangement, so in this our slab is bent like this. Okay, slab is bent like this. So such type of slab is called as a one way slab. And if you see in this, okay, two way slab, so there will be two way bending or bending in both side. Okay, there will be bending in both side. So this is the main concepts or main points we should be remember while designing slab. But if you see whatever point that supporting conditions that we have considered over here, that supporting condition is only for the theoretical point of view. But if you see in practical point of view, sometimes or many times this one way slab is also supported on all sides.
one way slab is also supported on all sides. In that case also we are considering particular slab as a one way slab. Now again I repeat, basically if you go through the theoretical point of view, so theory, according to theory, your one way slab should be supported on opposite sides only, or only one sides or two sides, okay. And in two way slab the slab is supported on all sides, okay. But practical point of view, generally we are providing the beams on all sides, okay. So in that case, we generally focusing on the LY by LX ratio. Okay, sometimes it can be happen. And last one is the reinforcement. Last is the reinforcement. So basically, if one way slab is there, so in one way slab we are providing the distribution steel along the longer span and main steel along the shorter span. So now here this LX is the shorter span and LY is the longer span. So in longer span we are providing the distribution steel, and in shorter span we are providing the main steel, because we are considering the bending moment, maximum bending moment, or the bending moment only along the shorter span. That's why we are providing the main reinforcement along the shorter span. But if you consider the two-way slab, basically in two-way slab our reinforcement bending moment is on both sides, in shorter span as well as longer span. That's why we are providing the main reinforcement in both directions. So that is the main difference between one way and two way slab. Okay, so again we repeat, one way and two way slab, first calculate the LY by LX ratio and decide one way and two way slab. And another thing is calculate the main reinforcement along shorter span and along longer span. So in one way slab we are providing main reinforcement along the shorter span, and in two way slab we are providing the main reinforcement on both direction, or on along the both span. So basically if you see the design point of view, okay, if you see the design point of view, so while calculating the reinforcement for the one way slab we require the movement only in one direction. We require movement in only one directions, either in X or we can consider as a Y. Maybe sign conventions are different for your design, okay. But in two way slab we have to calculate the movement in both direction, in X direction as well as in Y direction, in X direction as well as in Y direction. So while calculating the bending moment for the one way slab, so simple formula we can use, that is WL square by 8. That simple formula we can use, because this slab we consider as a simply supported slab, okay. But while calculating the bending moment for the two-way slab in both direction, MX and MY, we have to follow some guidelines as per the IS 456. We have to follow some guidelines as per the IS 456. Some formulas are given in the form of coefficients, okay. And to calculate that particular coefficient, some table is given, okay. So as per that table, we have to calculate coefficients. Basically, formula for bending moment is alpha, okay, W into Lx square, alpha W into Lx square. So we will see this, what is alpha and how to calculate that alpha, and then W, okay, that we will see definitely one by one in the two-way slab. But now this is a main difference, means while calculating the bending moment in one way slab, calculate the bending moment in one direction, that is WL square by 8. Simple formula we can use. But in two-way slab we have to calculate the bending moment in both directions, because we should provide the reinforcement in both directions. That's why we have to follow the guidelines as per the IS 456 to calculate the bending moment along X direction and along Y direction. Okay, so this is a basic point for the slab. Yes, if you have any doubt in this, that we will discuss and then proceed for the next design of one way slab. Yes. Yes. If any doubt, that we will discuss and then proceed for the next. हेलो, Yes. गुड इवनिंग सर। Good सर evening. वो हाँ, वन डे स्लैब के बारे में थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर देते। one way slab. About what? Support or reinforcement? रिइंफोर्समेंट रेनफोर्समेंट, ओके। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर वन वे स्लैब कंसिडर किया, लेट्स से सपोज दिस इज आवर वन वे स्लैब, ओके। शॉर्टर साइड में हम लोग मेन बार प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गर साइड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके, वो मिस हो गया था। यस यस,
लॉन्गर साइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं और शॉर्टर स्पैन में हम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग जनरली, अगर ये अरेंजमेंट कंसिडर किया, ये लेट्स से दिस इज आवर शॉर्टर स्पैन, सो ये अरेंजमेंट कंसिडर किया तो हम क्या कंसिडर करते हैं, अगर ये आपका स्लैब है, सो बेंडिंग मूवमेंट ऑफ स्लैब लाइक दिस, ओके ओके, सो इसलिए ये बेंडिंग मूवमेंट रेजिस्ट होने के लिए हम क्या करते हैं कि मेन रेनफोर्समेंट ये डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, ओके ओके। बट अगर इसी स्लैब को हमने टू वे स्लैब कंसिडर किया, तो टू वे स्लैब में क्या हो रहा है, इन टू वे स्लैब योर बेंडिंग मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शन, ओके, बोथ दिस डायरेक्शन along the x direction as well as along the Y y direction. direction, करेक्ट। सो ये बेंडिंग मूवमेंट आपकी ऐसी होगी, हाँ ओके। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, ओके। ओके। और सर सपोर्ट मतलब ये वन वे स्लैब में भी तो हम लोग मतलब फोर साइड में सपोर्ट देते हैं ना, जैसे एज पिलर। हाँ हाँ, वही डिस्कस किया मैंने। एक्चुअली क्या होता है, थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमने देखा, तो थियोरेटिकली थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपका जो भी वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब में जो भी सपोर्ट है, दैट सपोर्ट शुड बी ओनली ऑन टू साइड्स एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, okay, it is theory, and theoretical point of view, if you see the two-way slab, in two-way slab our slab is supported on all sides, okay, it is theory accepts, but if we go to the field, means if you consider as per the field point of view, so one way slab में भी आपके सपोर्ट्स चारों साइड में रहते हैं, field point of view, okay, so that is difference theory in theory and in practical, ओके सर, yes, वही कंफ्यूजन था। मतलब वन वे में भी तो हम चारों कॉर्नर पे हम लोग प्रोवाइड ही करते हैं, तो फिर ये वन वे और टू वे में डिफरेंस क्या रहा इन प्रैक्टिकल? यहाँ पे तो हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं जनरली। करेक्ट, रहता ही है एक्चुअली। अगर साइड पॉइंट ऑफ व्यू हमने फोकस किया ना, तो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, हम चारों साइड में बीम प्रोवाइड करते ही है, प्रोवाइड करते हैं जी, प्रोवाइड ही करते हैं। ओके सर, थैंक यू। लेकिन थियरी ऐसा बताती है कि भाई ऐसी कंडीशन रहना चाहिए वन वे स्लैब की, टू वे स्लैब की ऐसी कंडीशन रहना चाहिए, बट जनरली ओनली फॉर द सपोर्टिंग कंडीशंस वी आर नॉट फॉलोइंग द IS गाइडलाइंस, IS कोड गाइडलाइंस, ओके, यस, समझ गया सर। ओके ओके। सर ये वन वे में भी जो पासेज या गैलरी जो रहता है हम लोग का, तो उस जगह पे कंसीडर कर सकते हैं ना? मतलब वहां पे अगर आप पासेज दे रहे हो तो एक तरह से उसको आप वन वे स्लैब में ले सकते हो। हाँ, ले सकते हैं ना, क्यों नहीं। पैसेज रहा या कैसे रहता है दोनों साइड का आपका, बीम हो गया, पिलर पे वो लोडेड रहा, लेट डाउन रहा। यस यस। जनरली कैसे रहता है कि हम वो स्लैब कहाँ पे है, पैसेज में है, बालकनी है, या फिर आपके हॉल में आ रहा है, किचन में आ रहा है, हम वो नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि LY/LX रेशियो क्या है अपना। ओके ओके, सो मे बी ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स आवर LY/LX रेशियो इज व्हाट यू कैन से ग्रेटर देन 2 इन किचन आल्सो। ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर होता कहीं पे, हाँ पॉसिबिलिटी है। हम ऐसा मान के नहीं चल सकते कि नहीं मुझे पैसेज में वन वे स्लैब भी प्रोवाइड करना है या फिर मुझे गैलरी में वन वे स्लैब भी प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं रहता। मतलब ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि आपको इस जगह पे स्पेसिफाइड ये ही आपको प्रोवाइड करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। अभी कैसे रहता है जनरली, अगर देखो, अगर मैंने टोटल स्पैन कंसिडर किया, लेट्स से सब एक स्पैन कंसिडर करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे 8 मीटर और इसको हम कंसिडर करेंगे 4 मीटर, ओके। सो अभी 8/4 अगर मैंने कंसिडर किया, लेट्स से 8/3 कंसिडर करेंगे, 8/3 मीटर। सो अभी 8/3 मैंने कंसिडर किया तो इट्स ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। सो इट इज ग्रेटर देन 2। सर इस 2 को क्या स्लेंडरनेस रेशियो कुछ बोलते हैं ना सर? मे बी स्लेंडरनेस रेशियो, करेक्ट। स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफरेंट एक्चुअली, इट्स एस्पेक्ट रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो वी कंसिडर इन कॉलम। ओके, हाँ सर, ओके, दैट इज डिफरेंट। बड़ा था कॉलेज, अचानक से फ्लैश किया। yes. Actually, it is in column, slenderness ratio. On slenderness ratio, short column and long column,
that parameter is definitely that we will discuss, okay, in column. Generally, we will design for retaining wall. In retaining wall, when we design footing and their No, reinforcement. retaining wall is different. Retaining wall is different. Retaining wall is different. हाँ मतलब Okay. याद नहीं है उसमें ही था कुछ. नहीं, ओके रिटेनिंग सर. वॉल इज डिफरेंट. एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ना, इसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं या ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री रेशियो. ओके सर. Okay. Okay, so these are the basic points, okay, regarding the slab. Now we will proceed for the design of slab. Okay, so now first we will see design of one way slab. Now see, if you focus on the design steps, okay, so general design steps, or what is the aim of slab, or what is the aim to design of slab, to calculate the reinforcement, correct? See, our aim is what? To calculate the reinforcement. So first, the reinforcement, two types of reinforcements are there in one way slab, that is main reinforcement, and second one is the distribution steel, correct? Okay, these two reinforcement we are calculating, but actually that reinforcement is depend on bending moment, correct? Reinforcement is depend on bending moment, and whatever bending moment is produced over there, that bending moment is depend on the loading, correct? Bending moment is depend on loading. And if you see loading, so generally two types of loading are there, that is first is dead load, and second one is the live load, correct? Dead load and live load. And in dead load also two types are there, that is self-weight, okay, self-weight, and then additional load, okay, self-weight, and second one is additional load, that generally we call as a SIDL, okay, additional dead load. Okay, so SDL or additional dead load. SDL means super dead load. So actually this self-weight, again this self-weight is depend on the dimension, correct? Is depend on the dimension, and that SDL means additional dead load is totally depend on the material which are providing on the floor, okay, material which are providing on the floor. So I will consider here material. Okay, so while designing slab, we have to go through this path. Means first we have to decide the dimension of our slab, then we have to focus on which type of material we are using for particular slab as a floor finish. Okay, then as per these 2 points, we will conclude actual dead load coming on our slab, correct? Then live load, we have the one IS code, that is IS 875. Okay, basically three parts are there. IS 875 part 1, part 2, part 3. Part 1 for dead load, part 2 for live load, and part 3 for wind load. Okay, but slab point of view, we will focus only on two, that is first is the dead load, and second one is the live load. Okay, dead load means self-weight. Okay, and second part we will consider for the live load. Okay, so once you decide the total load, means separately dead load and live load, then calculate the total load coming on your slab. Okay, then we will calculate the total load coming on our slab, and then we will convert it to the design load or the ultimate load or factor load. Okay, design, ultimate, or factor by multiplying 1.5. Okay, basically over here we will consider only the working load. So first calculate the working load as per the condition, then convert it to the design load. Okay, and as per that design load, just calculate the bending moment. Now for the one way slab, simple formula is there to calculate the calculate bending moment, maximum bending moment, that is WL square by 8. But here we are calculating this bending moment, or we are providing reinforcement along the shorter span. That's why we will consider this span as a shorter span. Correct. Why we are considering? Because two span are there, LX and LY. LY generally we are considering longer span, and LX is the shorter span. While calculating the bending moment, we will focus on shorter span. Why? Because we are providing the main reinforcement along the shorter span. Okay, and then calculate the reinforcement as per the bending moment. Now see, here we have calculated only the
reinforcement, whatever reinforcement is required as per the loading and the bending moment, that we have calculated. But later on we have to check whatever dimensions we have provided for our particular slab, that dimensions as well as the reinforcements are sufficient or not. Okay, so that's why we have some check. Okay, if we go to the check, so basically for the design, for the beam and slab, we have two check. First is the deflection check. Okay, first is the deflection check, and second one is the shear check. Shear check. Second one is the shear check. Okay, so generally the deflections we will consider for the slab as well as beam. Okay, but shear check we will focus only in beam, because if you see the beam, in beam we are providing main reinforcement as well as the distribution steel or the shear steel. So why we are providing shear steel, why we are not providing the shear steel in deflections, that we will discuss in design of beam. Okay, why shear force is required in beam, and why shear force or the shear reinforcement is not required for the slab, that we will discuss in design of beam. Okay, but now in design in slab we are considering only the main reinforcement, so we will go to the deflection check only. Okay, that is one thing. And another thing is also, basically while calculating the self weight, first we have to decide the dimension. Okay, and in dimensions generally whatever design we are doing for the slab, that design we are considering for the 1 meter strip, means always we are considering width as a 1 meter. So another dimension is the depth. Okay, and initially we are assuming that depth. Okay, initially we are assuming that depth. So as per that depth and the 1 meter width, we will calculate the self weight and then finalize our total dead load. So this is a general procedure to design our beam. Okay, so again I repeat, main thing is what, to calculate the main reinforcement, correct, and the distribution steel. Actually main reinforcement is depend on the bending moment is depend on the loading. Okay, and in loading generally two types of loading are there: main, that is dead load, and live load. And if you focus on the dead load is again divided in two types, that is self weight and the additional dead load. Now self weight is depend on the dimension, and additional dead load is depend on the material that we are providing for the slab, or the providing for the floor finishing. Okay, so this is a general what we can say picture for the design of one way slab. Yes, now any doubt? Okay, so we will proceed to design. So we will see one by one how to design slab. So let's say suppose this is our plan. Okay, and in this slab plan, first we will focus on the one way slab. Now if you see over here, in total span generally symbol. Okay, this is a symbol for two way slab and this is symbol for one way slab. Okay, in one way slab we are providing the main reinforcement along one direction. So in shorter span generally we are showing the main reinforcement like this. Okay, and in two way slab we are providing the main reinforcement on both directions. So we will consider this symbol for the two way slab. So this is for the two way slab. Now for the today's design purpose, we have taken this slab. Okay, this slab, and this slab we will design. Okay, so this is WC. Okay, and for WC we will design one way slab, and all other slabs are two way slab. So that we will see in next slide. Okay, so we will proceed for the one way slab. So design of one way slab of first floor of G+5 building. Okay, producing using IS 456 procedure, using IS 456 2000. Okay, that already we have discussed. These are the dimension. Okay, 2660 mm. Okay, 2660 mm, that is shorter span or longer span. Now it is, yes, longer span, correct, that we will consider as a LY, and 940 is a LX. 940 mm is a LX that we will consider to calculate the aspect ratio. So just
decide the grade. Let's say suppose grade of concrete is M20, grade of steel is 500. Okay, Fe 500, that steel we will use. Clear cover to reinforcement 20 mm. Actually, one clause is also given in IS 456 how to consider the clear cover. Basically, clear cover to reinforcement is totally depend on the environmental condition or the weathering condition. Okay, so as per the weathering condition, the clear cover for the reinforcement will increase. Okay, so that clear cover is not same for all the environments. That you should be remember while deciding the clear cover. Then dimension of slab, these are the dimensions that we have mentioned over here, that is 940 mm by 2660 mm. Assume beam support, beam support means basically this slab is supported on some beam. Okay, like this. So that bearing generally we are considering as a 130, means support of that slab is 130. Okay. Okay. Then next, unit weight of concrete. Okay, so for you generally for calculating the self weight we require the concrete unit weight of concrete. So unit weight of concrete for the RCC is 25 kilonewton per meter square. Okay, now these are the given data or the given for this numerical. Now first calculate the aspect ratio. Okay, so here Lx is 940 and Ly is 2660 mm, that is given. And now as per this clause we know if Ly by Lx ratio is greater than 2, then slab shall be designed as a spanning of one way slab. Now if we calculate Ly by Lx ratio for this, so Ly by Lx ratio means aspect ratio is 2.82, and that 2.82 is greater than 2 means we have to design that particular slab as a one way slab. Okay, so now first we will try the depth. Okay, so second step is what, just try the depth and just consider the trial depth. Now here we have some rules to decide the depth, but if you don't want to follow these guidelines, so you can directly assume depth of slab, means not necessary whatever trial depth you are considering over here. Okay, that trial depth is as per this step. Okay, if you have your own method to decide the trial depth, so yes, you can do it, no problem. Okay, but basically as per other IS code guidelines, first we will decide the depth as per the basic value. Okay, so now as per the basic value, L by D ratio should be 20 for the simply supported beam. Now it is a one way slab, and the one way slab generally we will consider for the simply supported slab. Okay, and as per the IS code clause 23.2.1, so simply supported, for the simply supported, our effective depth, okay, span to effective depth ratio for span up to 10 meter is equals to 20. That's why that basic value we will consider as a L by D is equals to 20. Okay, now after that assume the percentage of steel. Now see, here we have not calculated any reinforcement, correct, but for the calculation of this modification factor, first we have to decide some reinforcement, percentage of reinforcement, and generally we are providing minimum reinforcement, that is 0.12%. And if you want to go through that 0.12%, so you can consider this one also, no problem. Are you getting? Generally here we are assuming the percentage of reinforcement, and if you see the minimum clause or minimum reinforcement clause as per the IS 456, so it is 0.12. So if you want to go for 0.12%, so you can go for the 0.12%, no problem. But generally we are considering it 0.2 or 0.20 to 0.25%. Okay, so now here for these conditions we will consider percentage of steel as a 0.25%, and now for the percentage and FS value, calculate the modification factor. Okay, so if you see over here, so generally this is one graph. From this graph we have to calculate the modification factor. Okay, so now see, in this graph, first here you can see FS values are there, FS
290, FS 240, FS 190, FS 145, and FS 120. Okay, and then how to calculate that FS? The formula is also given over here. FS equals to 0.58 into Fy into area of cross section of steel required and area of cross section of steel provided, means AST required divided by AST provided. Now initially here we are deciding the depth, okay, and we don't have any provided reinforcement on and the required reinforcement. So in that condition we will consider this ratio as a 1, means for this condition we are just considering both required as well as provided reinforcement is 1. Okay, now just calculate this Fs. So 0.58 into the now formula is what? 0.58 into Fy, where Fy is grade of steel, okay, and grade of steel that we have considered 500. So 0.58 into 500, it is 290. Okay, 0.58 into 500, it is 290. So initially for deciding the trial depth we will consider Fs as a 290. Percentage of reinforcement already we have decided or we have assumed, let's say 0.25, and as per percentage of steel and this Fs value, okay, our modification factor is approximately 1.35. It's again approximately, because if you see the interval is here 0.2, so 0.2 interval is there, every line, horizontal line, having 0.2 distance, correct? So 0.2 interval is there, so approximately we will consider this value as a 1.35. okay, so now here modification factor is 1.35 as per this page and clause of 456, and then calculate the effective depth. Okay, so formula for the effective depth is what? Span divided by basic value into modification factor. So span is 940. Generally consider shorter span because we are providing main reinforcement in shorter span. In 2A slab also we will consider shorter span only. Okay, so span divided by BV into basic value, where span is 940, basic value is 20, and modification factor is 1.35. So required depth for this condition is 34.81 mm. Means whatever slab we are providing, okay, if we consider this condition, reinforcement as well as the modification factor, so for this condition we required only 34 mm thickness, let's say 35 mm thickness of slab, but generally we are not providing thickness less than 75 mm. Okay, in practical point of view also we are not providing less than 75 or 100 mm. Okay, we are not going below the 100 mm of any slab. Okay, so now here we will just cross check it. Okay, so 35.81. So for that depth just consider the diameter of bar, let's say we will going to provide the 8 mm bar, and clear cover to reinforcement is 20 mm, already we have decided. Now as per this diameter and the reinforcement, just calculate overall depth. The formula for overall depth is D, means depth, effective depth plus clear cover plus 5/2. So how this total depth will come? Let's say suppose this is our slab depth. Okay, this is total depth, this is total depth, and let's say suppose this is our reinforcement. Okay, this is our main reinforcement. So generally from top to reinforcement, okay, center of reinforcement, this distance we are considering as a effective depth. Okay, and then clear cover is what? From bottom of reinforcement to the extreme bottom of slab, that is our clear cover. Now half of reinforcement is remaining, so this half of reinforcement that we have to consider. So this is the formula to calculate the overall depth. Capital D equals to small d plus 5/2 plus clear cover. Okay, now as per our formula we have calculated the effective depth. Now effective depth is 34.81. Then clear cover that we have assumed 20, and diameter we have assumed 8. So 8 divided by 2, that is 4. So 34.81 plus 20 plus 4, it is 58.51 mm. Okay.
Now, overall depth required for the given condition or the assumed condition is 58.51. So we will round up it up to the 125. Okay, generally that already we have discussed. Effective depth generally as a field point of view, effective depth generally we are considering as a 100 mm, minimum 100 mm. Okay, so directly I will consider overall depth as a 125 mm. But if you are not interested to consider the overall depth, 125 mm means difference is so much, double difference is there, correct? So you can go from 100 mm also. Okay, but if you consider effective depth as a 100 mm, so your sorry, overall depth as a 100 mm, so your effective depth is also reduced. This means it's less than 100 mm. Okay, so that's why we are considering overall depth as a 125 mm, and overall depth is important for fixing the centering and form work. Okay, for form work, overall depth is most important. Okay, so effective depth provided d minus cover minus 8 by 2, same formula is there. Now clear cover and diameter, half of the diameter we have to reduce from the overall depth to for the calculation of effective depth. So d minus cover minus 8 by 2, so 125 minus 20 minus 4, that is 101. So provided depth, effective depth is 101 and overall depth is 125. So these two dimensions we will fix for the for design purpose. Okay, now once you calculate the depth, then go to the calculations of effective span. Means whatever span we have calculated, that is Lx and Ly, that span are the clear span. Okay, so if you see, let's say suppose this is our slab. Okay, so if you consider the distance between or the internal distance between two columns, that span is a clear span. Okay, clear span. Okay, it is clear span. And effective span means what? It is center to center distance. Okay, center to center distance of support. This is our effective span. Now here for the calculating reinforcement, we have to consider the effective span. Means whatever reinforcement we are providing for our slab, that reinforcement is up to the center to center distance or up to the center of support. That's why we required to calculate effective span. Okay, so now if formula for effective span is Lx plus bearing, bearing means this support. Now this support that already we have considered, just consider 230 mm as a beam for the support, and another formula is Lx plus d, where d is the effective depth. Okay, d is the effective depth. Now, so these two formulas are there to calculate effective span, and we have to consider the minimum value from these two. Okay, minimum value. So 940 plus 230. So 940 plus 230, it is 1170. Okay, and Le for the effective depth 940 plus 101, it is 1041 mm. So minimum is 1041. So we will consider this 1041 mm for the effective span. Okay, now next one is the loading calculation. As per our discussion, first we have to decide the width. Okay, and now we are considering 1 meter width of strip to design the slab. Okay, so that's why consider 1 meter strip for the slab. Now first calculate the self weight. Okay, and generally formula for self weight is what? Dead load. Okay, generally formula, what is the formula? That is area into density or volume into density. Okay, these are the two formulae to calculate the self weight, but it's depend. Means if we required our load in kilonewton per meter, okay, if we require our load in kilonewton per meter, so in that case we will consider area into density. And if we required our load in kilonewton only, so in that case we will consider volume into density. Okay, and another one point is there. If we required
load in kilonewton per meter square, in that case we will consider one dimension into density. One dimension into density. Now here we will consider only one dimensions because we are calculating, initially we are calculating our load per meter square. Okay, and later on we will consider that per meter square, or we will convert that kilonewton per meter square to the kilonewton per meter by considering 1 meter strips. Okay, so that's why here initially we will consider only one dimension, that is depth. So d into unit weight of concrete. So now overall depth that we have considered 125 mm, convert in meter, that is 0.125 into 25. So it is 3.125 kilonewton per meter square. Okay, this is our self weight. Now after that calculate the live load. Generally live load is given in IS 875, okay, part 2. So this is table number 1, okay, page number 7. Okay, so on table number 1, page number 7, this live load value is given, and that live load is different as per the area or as per the room, you can say. Okay, so for kitchen live load is different, for balcony live load is different, for hall live load is different. Okay, so for every room the live load is different. So just go through that IS 875 part 2. So you can find the live loads are different as per the area. Okay, generally for the balcony and hall, generally we are considering, and I think in kitchen room also we are considering 3 kilonewton per meter square live load, and all other area, in all other area the live load is 2 kilonewton per meter square. So just go through that IS code, you can find the live load as per the different area. So now for this condition, just consider live load is 2 kilonewton per meter square. Now next one is the superimposed dead load or the super dead load. So generally super dead load is what? It is the floor finish. Okay, and floor finish means the additional material that we are using on particular slab. Okay, so now whatever slab here we have considered, means one way slab that we have considered, that one way slab is for the toilet. Okay, so generally for toilet we are providing the sunk. Generally for toilet we are providing the sunk. That's why we have considered the sunk load over here. See, let's say this is our one slab. This is our one slab, and let's say here bedroom is there. Okay, and suddenly another slab is starting for the toilet. Okay, so for toilet generally we are increasing the depth of slab. Okay, so this sunk part we are providing. Okay, this sunk part we are providing to fix the cupboard, or we can say that basket. Okay, toilet basket. So for that we are providing this space. Okay, and that particular space is called as a sunk portion. So that's why we have to consider the sunk load also. Okay, and now here we have considered this sunk thickness. Okay, this sunk thickness is 325. Okay, this sunk thickness generally we have assumed it 325. Okay, so we have to consider the thickness or the weight of that 325 material also. Okay, now here for the slab or on the slab we have considered screeding. Okay, and thickness of the screeding is 50 mm, and then flooring is also there, and the flooring tie is having thickness 10 mm. Okay, so before deciding or before calculating this floor finish for your particular slab, just contact to your contractor or the architect, and then finalize which type of material they are using or which type of floor finish they are using for the particular area. Okay, that you have to finalize from the contractor or architect, and then decide the self-fit or then decide the floor finish for your slab. Okay, but now here we have considered screeding as a 50 mm, flooring 10 mm thickness, and the sunk load as a 325 mm thickness. Okay, so
For the screeding, density is 25. That density we can see in IS 875, IS 875 part 1. Okay, if you refer this one, so you can find this value 24. Okay, then floor finish 22, that is a wet density for the screeding 24, 22 for the flooring. Okay, and then sunk, for the sunk load, wet density is 20 mm. Okay, so thickness is 50 mm, converted in meter, that is 0.05, 10, 0.01, and for 325 it is 0.32. So just calculate it. So it is 7.92 kilonewton per meter square, and just round up it in higher level, that is 8 kilonewton per meter square. Now these are the loads which are coming on our slab. Sulfate 3.125, live load 2, and SIDL means superimposed dead load is 8 kilonewton per meter square. Now calculate the total load. 3.125 plus 2 plus 8, that is 13.125, and this load is a working load, so convert in ultimate or factored or design by multiplying 1.5. So 13.125 into 1.5, that is 19.7 kilonewton per meter square. Okay, now here we are considering 1 meter strip. So if you multiply by 1, means if you want to convert this load per meter, correct? So now here we have calculated this load per meter square, but if you want to convert this load for kilonewton per meter, so 19.75, just multiply by 1, because we have considered 1 meter width for strip, so its unit or the intensity is same, that is 19.7 kilonewton meter. So whatever load we have considered over here, that load we can consider that intensity per meter square or per meter. Okay, so impose floor load difference. Okay, here you can see all rooms and kitchen 2, toilet and bath 2, corridor, passage, staircase including tires, okay, 3, and balconies 3. Okay, these are the imposed load kilonewton per meter square, and in kilonewton is 1.8 and 1.4. Okay, so this is in part 2 IS 875 live load. Okay, 875 part 2. Okay, so before proceeding, if you have any doubt in the calculation of loading, and then in previous steps, means to decide the effective depth and then assume the trial depth and the loading, that these 3 steps we have covered. So if you have any doubt, then that we will discuss and then proceed for the next. Yes. Okay. Okay, after the loading, then next step is to calculate the bending moment, maximum bending moment or the design bending moment, and the formulae are given. Formula generally given in page number in IS 456 on page number 90. Okay, so for simply supported beam, simple formula is there, that is WL square by 8, but in W we will consider the factor load, and L is the effective span. So factor load is 19.7 and effective span is 1.0412, 1.041 square should be there, divided by 8. So this bending moment is 2.668 kilonewton meter. Now here we have calculated the bending moment. Before proceeding, means before calculating the reinforcement and all other things, first we will focus whatever depth we have provided, that depth is sufficient or not for the bending moment. That first we have to decide and then proceed for the next design. Okay, so for that, next step is to check the depth as per the bending moment. Now just compare your mu max and mu limit, where mu max is the maximum bending moment and mu limit or the limiting moment or the moment of resistance.
And actually that limiting moment or the moment of resistance is depend on grade of steel. Okay, now here we have provide 500 grade of steel, that is Fe 500 that we have considered. Okay, so for Fe 500 our limiting moment of resistance is 0.13 0.133 FCK BD square. Basically formula is 0.133 FCK BD square. For 250 it is 0.148 FCK BD square, like that. Okay, so formulas are different for the moment of resistance as per the grade of steel. Now for 500 it is 0.133 FCK BD square and maximum bending moment is 2.668 kilonewton meter. So convert in kilonewton mm, because our Newton mm, because our FCK is in Newton per mm square. FCK, that is characteristic strength of concrete, in Newton per mm square, width in mm, and whatever depth we require, that depth also we are calculating in mm. So convert this unit in Newton mm. So kilonewton to Newton, that is 10 to the power 6, sorry 3, and meter to mm, that is 10 to the power 3. So 10 to the power 3 plus 10 to the power 3, that is 10 to the power 6. So 2.668 into 10 to the power 6 is in Newton mm. Okay, is equals to 0.38 FCK, where FCK is 20 because we have assumed M20 grade of concrete. We have assumed M20 grade of concrete. So that 20 is indicate the characteristic strength of concrete. So it is 20. FCK is 20. Width we have considered means strip, 1 meter strip that we have considered. So width is 1 meter, convert in mm, that is 1000 into D required. Okay. So just solve this equation. So we can we will get this value 31.67, means as per this bending moment and FCK, required depth is 31.67 mm and we have provided 101 effective depth, 101 mm, means required is less than provided, means safe, means whatever depth we have provided, that depth is safe. Now see, if that required depth is greater than, means in this formula or whatever calculations we have did over here, if in these calculations your effective depth is greater than provided, so in that case we have to revise the all steps. Because see, if we increase now see, let's say suppose from these calculations required depth, let's say our required depth is 150, required depth is 150 and we have provided only 104, 110. So now it is greater than provided. So now we have to increase the depth, and let's say suppose revised depth, if we consider revised depth as a 150 mm, so if we revise that depth, particular depth, so your sulfate will increase, correct? Sulfate will change. So if sulfate will change, then bending moment will change. So again we have to revise the dimension. Are you getting? Again we have to revise this dimension and then again check for your depth. Whatever depth we have considered, that depth 150 depth, revise 150 depth, that is okay or not. Okay. Now next is, if depth is satisfied, then directly go to the calculation of reinforcement. Okay, area of steel. So formula as per the IS 456 is AST equals to 0.5 FCK divided by Fy in bracket 1 minus under root 1 minus 4.6 mu divided by FCK BD square into B into dx. Actually there's dx and dy is required for the two-way slab, but now here only one-way slab we are designing, so only d we can write, no problem. So 0.5 into FCK is 20, Fy is 500. Okay, 1 minus under root 1 minus 4.6, now mu, that is limiting moment of resistance, that is 2.668 into 10 to the power 6, again convert in Newton mm. FCK is 20, B is 1000 and D is effective depth is 101. Okay, so just solve these equations, you will get reinforcement, required reinforcement. Now required reinforcement is how much? 61.7 mm square. As per this bending moment, we required only 61.7 mm square reinforcement. But
again one clause is there in IS 456, one clause is there, so that reinforcement should not be less than whatever reinforcement or whatever required reinforcement we have calculated, that required reinforcement should not be less than of minimum reinforcement, and the formula for minimum reinforcement in slab is 0.12% of BD. Okay, so that is minimum criteria. So if you calculate the minimum reinforcement, so minimum reinforcement is 150 mm². Okay, so required is 61 and minimum is 150. So for the further reinforcement or for the reinforcement, we will consider this area 150 mm². So that's why provide 150 mm² as a main steel. Okay, are you getting? Let's say suppose if we calculate this reinforcement and we got this reinforcement as a 200. Now this 200 is greater than 150. So in that case, we will consider 200 mm² area for mean steel. Now next, spacing bar. Okay, means whatever main reinforcement we have calculated, area of reinforcement we have calculated, that is 150 mm². For that we have to decide the spacing of bar. Okay, so one clause is given, that is 26.3.1, page number 46 of IS 456. Okay, so as per this clause, first we have to decide the diameter and clear cover, already we have decided. This spacing of bar, how to calculate spacing? Area of one bar divided by area of steel, or we can say the provided area of steel. So here we have assumed 8 mm diameter, so area of one bar is pi by 4 into d square, and total provided area of steel is 150. Okay, so pi by 4 into 8 square divided by 150 into 1000, so it is 335 mm. So approximately we will consider it is 330 mm. So basically on site also, whatever roundup section we are considering over here, that roundup generally we are considering in 25 range, 25, 50, 75, 100, because if you want to convert in inch, okay, so generally we are considering 25 mm is equals to 1 inch, like that. For that, generally as a side point of view, we are considering this 25 roundup. Means now here we can consider 325 also. Means if you consider 325, so it's 7 inch. Okay, 7 inch spacing we are considering, like that we can consider it. Okay, but yes, theoretically it is okay, 330 mm. Okay, so sorry, yes, it should be minimum 150, that already was considered over here. Okay, so maximum spacing between bars should be minimum of, now this clause is given for slab. First, that this we will discuss 26.3.3, maximum distance between bars in tension, unless the calculation of crack width shows that the greater spacing is acceptable, the following rules shall be applied to flexural member in a normal, internal, or the external condition of exposure. Okay, so this condition is there generally, that is a point is also there, but that a point is not much important for the design. That's why I have considered directly b point, that is slabs. The horizontal distance between the parallel main reinforcement bars shall not be more than the 3 times of effective depth of solid slab. Okay, first condition is what? The horizontal distance between the parallel main reinforcement shall not be more than 3 times of effective span, 3D. That's why first we have considered as a 3D. Okay, or 300 mm, whichever is smaller, or 300 mm. Another point we have considered here, 300 mm. Okay, so now as per the IS code, we have considered 3D as well as 300. So if you calculate the spacing as per the 3D, so 3 into effective span 125, so spacing as per the first clause or IS code, we require 375 mm. Okay, and another one is 300. And
later on, here we have calculated the spacing as per the reinforcement that we have provided for our slab. Okay, and as per this reinforcement and the diameter, we require 330. So just compare these three. Okay, just compare these three and choose the minimum value from these three. Now first for 3D is 375, second is 300, and as per the reinforcement is 330. So minimum is 300. So we will go through this spacing. Okay, so 300 mm spacing generally we will consider for the main reinforcement. But as a field point of view, generally in our consultancy also, we are not providing spacing between slab less than 200, sorry, greater than 200. Okay, so maximum spacing we will consider as a 200. So as per our consultancy, we consider 200 mm spacing. Means we will compare this one, means this 200 mm thick spacing, we will compare these three values. Okay, so if let's say suppose in the calculations we got 150 mm spacing. Okay, let's say suppose 150 mm spacing is required as per this reinforcement. So now in that case we will provide this 150 mm spacing. Correct. Now we will compare this 3D 300, then 150, and this 200. Now 150 is okay. Okay, so now here then consider spacing between bars 200 mm as per our condition. Okay, not necessary we should go through this 200 mm, but in our practice we are using 200 mm only. But as per the IS code, maximum spacing should be 300, not more than 300. So provide 8 mm phi about 200 mm center to center spacing. Sentence should be there for the main reinforcement. Now here we have revised the spacing. So obviously our main reinforcement or the provided reinforcement will revise. So we will calculate the actual provided reinforcement as per the spacing. Now just replace this formula, area of steel and the spacing of bars. So this formula will convert area of one bar divided by spacing. So area of one bar, that is pi by 4 into 8 square, divided by spacing is 200 into 1000, that is 251.33 mm square. So this is the provided reinforcement, because this provided reinforcement again we require for the percentage calculation. Okay, so this is our provided reinforcement, 251.33 mm square. Okay, so yes, before proceeding, any doubt? So first of all, tell me, may I audible now, because it's the session will going only in one way. So maybe two conditions are there. Yes, sir, you're audible. Yes. So maybe there is no any question from your side. So maybe two conditions are there. You are getting all points, means there will be no any doubts. Or another thing is you didn't get any points from my side. So which condition is there? आपको एक तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, No, या फिर सब कुछ समझ में no, आ sir, रहा I है? am getting, sir. Yes, yes, yes. Means it is okay. हाँ सर, रट्टा मारने का बस। Sorry. मतलब सर फिर से, मतलब जो कॉलेज में किया था प्रैक्टिस 2 बार 3 बार, मतलब उस चीज को लिख करके वो चीज करना होगा। नहीं, एक्चुअली वही हम यहाँ पे निगलेक्ट करना चाहते हैं कि रट्टा नहीं मारना है हमें। इसलिए मैंने पहले प्रोसीजर बताया आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे सुनो, देखो कि जनरली कैसा है कि कौन सा ऐसे है ना नंबर सर, है ना, तो कोई ना कोई स्टेप है ना ओवरलैप हो जाता है या मिस कर जाते हैं। आप अगर 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस मतलब लिख करके करते हो तो एक गो थ्रू रहता है कि हाँ इसके बाद यही स्टेप आता है, इसके बाद मेरे को ये कोड बुक यहाँ से यहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ बार शेड्यूल चाहिए, सारा चीज उसके बाद होता है ना। ओके ओके, नहीं मैं फिर भी वैसे ऐसे बोलूंगा कि स्टेप भूलने दो। जो भी स्टेप यहाँ पे मैंने दिया है ना, डोंट फॉलो दिस स्टेप, एक भी स्टेप फॉलो मत करो। बस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, कोड बुक वो कैलकुलेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, बराबर है। ये अगर रफ भी आपने करते गए ना, सो दैट विल बी सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम। रट्टा मत मारो। पहली स्टेप हम क्या करेंगे भाई, गिवन डेटा लिखो, फिर बाद में एस्पेक्ट रेशियो निकालो, फिर क्या है वो भूल जाता है वैसा आदमी, ठीक है ना। आप भूल गए, फॉर एग्जांपल
ट्रायल डेप्थ निकालना आप भूल गए हो, आपको बेसिक हाँ वैल्यू भी पता नहीं, मॉडिफिकेशन फैक्टर भी पता नहीं, लेकिन नहीं इतना तो भी हमें पता है कि भाई डेप्थ हमें 100 के नीचे नहीं प्रोवाइड करना है। नहीं करना। हाँ लेट ये से मैंने डायरेक्टली अज्यूम किया कि मुझे इफेक्टिव डेप्थ 100 mm ही कंसिडर करना है, बाकी का पता नहीं, मैं मिनिमम से जाऊंगा। जी ओके, सो डायरेक्टली मैं इफेक्टिव डेप्थ कंसिडर करूंगा 100 mm, उसके हिसाब से ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेट करूंगा। लेट से आ गया 125 mm। ओके, अभी मेरा डेप्थ फाइनल हो गया, सो डेप्थ से मैं सेल्फ वेट कैलकुलेट करके क्या करूंगा, लोडिंग कैलकुलेट करके बेंडिंग मोमेंट को जाऊंगा। जैसे मेरे पास बेंडिंग मोमेंट आई, उसके लिए मैं रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर, खत्म डिजाइन। जी सर। रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अभी क्या है, अभी आगे जाके, अभी तो मेरे पास रेनफोर्समेंट आ गया है, रफली कैलकुलेशन करके मैंने रेनफोर्समेंट निकाल लिया है, करेक्ट। जी अभी मुझे सोचना है कि भाई जो भी रेनफोर्समेंट मैंने कैलकुलेट किया है या मैंने डेप्थ अज्यूम किया है, दैट इज करेक्ट और रॉन्ग, वो अभी मुझे डिसाइड करना है। सो अभी वो मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे रेनफोर्समेंट चेक करना है तो क्लॉज क्या बोलता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट रहना चाहिए कितना, 0.12%। सो पहले मैं उसको चेक करूंगा, यस 0.12% सेटिस्फाइड हो रहा है, छोड़ दो, बाजू में रखो, बराबर है। अभी दूसरा क्या है, मुझे डेप्थ देखना है करेक्ट है कि नहीं। अभी डेप्थ में कैसे देखूं? बेंडिंग मोमेंट तो मेरे पास आया है, करेक्ट। बेंडिंग मूवमेंट को मुझे किससे साथ कंपेयर करना पड़ेगा? लिमिटिंग और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बिकॉज कैसे कि हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी पता रहना चाहिए। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द इंटरनल मूवमेंट दैट विल बी रेजिस्ट द एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट। ओके, और इसलिए हम रिलेशन क्या कर रहे हैं कि वॉट एवर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर, दैट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू योर एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट। जितना भी एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, एटलीस्ट उतना तो रेजिस्ट करना चाहिए। तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो वहां पे फिर करेक्ट, ब्रेन हो जाएगा। करेक्ट, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ये कंडीशन एज पर द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कंडीशन इज और दैट पॉइंट इज ओके। ओके, बट अनदर थिंग इज क्या क्या है कि भाई मैं जितना भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर करूंगा, वो एटलीस्ट कितना रहना चाहिए, जितना उसके ऊपर आ रहा है उतना। हाँ, उससे ज्यादा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उतना तो भी रहना चाहिए टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। अगर ये 3-4 पॉइंट अगर समझ में आ गए ना, सो बाकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बोलो या फिर डिजाइन कंसेप्ट बोलो, ये सब एज क्या बोलते हैं इजी है, उस पर ज्यादा फोकस रखने की जरूरत नहीं या करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैक्सिमम देखो, तो सर इधर कोड कोड बुक का ही रेफरेंस लेना होता है, 4 5 6 का पेज नंबर 13 13 14 15 96 ऐसे बराबर, करके पेज नंबर 57 बराबर, ऐसे ही बराबर। करके ना, उसके बाद फिर कोड नंबर उसका जाना पड़ता ना, क्या था वो, एक और था ना अपने, अरे क्या था, 7, भूल गया मैं अभी, आपने बता रहा 875, 875। 875, हाँ वहां से फिर हाँ, रेफरेंस ले IS लेना 875। IS 875 फॉर लोडिंग। लोडिंग के लिए, वहां से हम लोग लोडिंग का निकालते हैं। बराबर, बराबर। मैक्सिमम चीज तो कोड बुक में ही अपने को है, तो हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि कैसे है कि एक बार गो जनरली थ्रू हम क्या हो करते जाता हैं, है तो याद हो जाता है। हाँ राइट राइट, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम डिजाइन करते समय क्या सोचते हैं कि जो भी हमें गाइडलाइंस दिया है IS कोड में, उसके वो थ्रू जाने गाइडलाइंस का हमें चाहिए। हाँ उसके थ्रू जाना है। और उसमें वैसे आरसीसी डिजाइनिंग में इतने यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ओके, एक बार भी आप IS कोड रेफर किया ना, आपको सब क्लॉजेस पता हम्म, चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उधर से आ बट जाता है, जी जी हाँ, बट कैसे है कि प्रॉब्लम कैसा है कि IS कोड में जो भी दिया है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। जी। वो आप कभी भी रेफर कर सकते हो, उसको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं, हाँ वो रेफर कर सकते हैं, वो वो अवेलेबल। रेफर कर सकते, कभी भी ओपन कर सकते, लेकिन डिजाइन कैसे करना है उसको याद रखना है ना। तो जी इसलिए बोल रहा मैं, रट्टा नहीं मारना है, हमें वो कंसेप्ट क्लियर करना है कि हमें किसके लिए क्या चाहिए, किसके लिए क्या चाहिए। अगर ये अगर बात कंसिडर समझ में आया ना, सो जी जो भी वेरिएशन हो रहे हर एक एलिमेंट में, जो भी वेरिएशन होंगे डिजाइन के, वो जी। वेरिएशन तुरंत हमें समझ में आएंगे। क्योंकि कैसे कि डिजाइन जो रहती है, डिजाइन जी बोले तो क्या, टू कैलकुलेट द रेनफोर्समेंट। ओके, रिइंफोर्समेंट होता है, जैसे अभी आपने डिजाइन किया था ना, मिनिमम मेरे को इतना लेने का, मैक्सिमम वो क्या बोले, हाँ, एमयू लिमिट और एमयू निकाले थे जो अभी, बराबर, मैक्सिमम बराबर। हाँ, मैक्सिमम मूवमेंट, तो वहाँ पे अपने को एक उसके लिमिट के अंदर लेने का था। हाँ, उसके लिमिट के तो अंदर फिर लेंगे बस। हाँ, तो ये सब अगर चीज अगर हमें से चेक करने का। मेरा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी है
वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा है एज कंपेयर टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सो मेरा सब हाँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मेरा जो भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट सॉरी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट रेनफोर्समेंट इज एज पर द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जी जी। हाँ सर, वैसे समझ में तो आ गया सारा चीज। ओके ओके, नहीं इजी है वैसे, कोई ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। सो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जनरल, यस यस, एनी डाउट? नो सर, Okay. So then after distribution steel, generally we are considering minimum reinforcement for the distribution steel. So generally purpose of this distribution steel is what, to bind the main reinforcement at their position, means to hold the main reinforcement at the proper position. That's why we are providing distribution steel, and only for that purpose we are considering minimum reinforcement for the distribution steel. And as per IS 456, minimum reinforcement is 0.12% of cross sectional area of slab. Okay. And now B and D are the dimensions of our slab, where B is 1000, is 1 meter strip, and D is overall depth, that is 125. So just calculate it. So it is 150 mm square. Okay. So again, calculate the spacing for this same clause, or the same what we can say, the calculations are there to calculate the spacing for bar in distribution steel or the distribution steel. So again, consider any diameter, 8 mm diameter and 20 mm diameter. Okay. So generally for I think two years before, some structural engineers are using 6 mm bars, okay, mild steel for the distribution steel. But now mild steel is not available in market, so generally we are using 8 mm minimum reinforcement or minimum bar for the reinforcement. Okay, so diameter is 8 mm, clear cover 20 mm. So spacing, just calculate the spacing, 300 mm square. And again, the clause is 5D and 450 for the distribution steel. And now that we will compare with our calculator 300, so choose minimum. Okay, so if you go through that calculation, if you go through this calculation, so we should provide 300 mm, minimum is 300 mm, so we will go to the 300 mm. But in our consultancy we are using 200 mm minimum maximum spacing, sir. Okay, so we are not providing more than 200 mm spacing in both distribution steel and in main steel. So just provide this reinforcement 200 mm spacing, and then again provide 8 mm pi, means 8 mm diameter, about 200 mm center to center spacing as a distribution steel. Then I can calculate the provided area of steel. Now here we have calculated the area of steel in in shorter span, in longer span. In shorter span we are providing main steel, and in shorter span longer span we are providing distribution steel, and both steel we have calculated. And then we have check our depth for the maximum bending moment also. Now we have to calculate the deflections, or we have to check our slab for the deflection. Okay, so now see, generally the deflection is depend on two parameters, depth as well as the reinforcement, that we will discuss in formally. See, for the deflection, first we have to calculate the percentage of steel. Okay, so percentage of steel, now here we have provided steel is 251. Formula for the percentage of steel is what? Provided steel divided by BD into 100, where provided steel is 251.36, B is 1000, and D is 125 into 100. So it's 0.210. Now percentage is 0.210, and initially, if you remember, we have considered, I think, 0.25%. Correct. Initially, we have considered 0.25%, but actually now here we have provided 0.2% of steel. Correct. Again, calculate Fs. Now here we have the area of steel provided as well as required, and the formula to calculate Fs is 0.58 into Fy into area of cross section steel required divided by area of cross section steel provided. So 0.58, Fy is 500, required steel is 61.7, provided is 251.36, so Fs is 71.18 Newton per mm square. Now if you use this, see, it is 71.18, 71.18, now 7170.
let's say 70. Now Fs line for 70 Newton per mm square. This line is not there. Okay, so if we use this 0.2, see, these are percentage, correct, 0.2, and if you use this one, so this line or this graph will end over here, correct, and maybe whatever value is there, Fs value or Fs line is there, maybe that Fs line is here. Okay, maybe this line is here, correct. So this particular value or this graph is end at 2 meter. So maximum modification factor we consider as a point, sorry, 2. So we will use modification factor as a 2. Okay, so D required span divided by basic value into modification factor, that is 940 divided by 20 into 2, that is 23.5 mm, and it is less than 101 mm. Okay, it means, so whatever depth we have provided, that depth is okay for the deflection. Okay, that depth is okay for the deflection, because if you refer the IS code, sorry, if you refer the IS code, so as per IS code, for the simply supported, our deflection criteria is L by D. L by D is equals to 20, because just wait. Here you can see this is for the deflection criteria, vertical deflection limits. Okay, means L by D equals to 20. It is for the deflection criteria. Okay, L by D is for the deflection criteria. That's why once you calculate this ratio, span divided by modification factor into, sorry, span divided by modification factor into basic value, and if that value is less than provided depth, it means our slab is okay for the deflection. Okay, so now it is safe, and then directly just provide the reinforcement. We know the minimum main steel we are providing along the shorter span, and distribution string along the longer span. Okay, but generally now here in the calculations, our shorter span and longer span is reinforcement in shorter span and longer span is same. So this is general arrangement. But basically, if you see the main steel, okay, so alternate bent up bar we are providing. Okay, alternate bent up bar means, let's say suppose this is our shorter span, so this reinforcement we are providing like this, alternate. Okay, now here like this. Okay, alternate bent up bar we are providing for main steel, and distribution steel is straight in one way slab. Okay, so this is for one way slab calculation. Now, yes, before proceeding to proceeding for two-way slab, any doubt that we will discuss, and then proceed for the two-way slab. Yes. Hello. Yes. Hello. Yeah. Yes. Sir, in Hello? the slab, we need not required to calculate the crack width. For slab. Yes, sir. Generally, for slab, we need not to consider crack width. Yes. Generally, because see that crack width is depend on, means check for crack width is depend on your environmental condition. Okay, if your environmental condition is severe, so in that case definitely we have to check the crack width also, correct. And as per the IS code, generally we are providing 0. I think 20 mm width we are providing. Okay, so clause is given in IS 456 for the crack width, but yes, that required only for the severe environmental condition. But for moderate and mild environmental condition, no need to go for the crack width. Generally, we are not doing it.
for any type of element. The crack width generally crack width check we will take only in the water tank, because maximum stresses are developed over there, correct? And that condition is a Okay. condition is moisture condition, means we are considering severe condition for the water tank. So in that case, our crack width check is necessary. Sir, in the IS code also it is given that in limit state design we have to go for maximum 0.2 mm. Maximum 0.2 mm. More, 0.0, yes, 0.2 mm, correct. more than that we cannot go. In the mild Yes, condition also, I think. yes, in mild condition, and in moderate condition, in both condition it is 0.2 mm, correct. 0.2 mm. And sir, another thing, sir, why shear reinforcement we are not providing? Because Shear of date of birth, reinforcement, sir. yes, why shear reinforcement is not necessary for slab, that we Slab. will discuss in beam. Okay, why in beam? Sir, listen to my answer, sir. If I am correct, just tell me, sir. Because in the support position, maximum shear force will come. Yes. And in that portion, we are providing the cranked bar. Because of that reason, or any other reason is there? Yes, this reason is also there, but if you see, let's say suppose this is our slab or beam. Okay, so if you go for the bending moment or shear force diagram, first suppose because shear reinforcement is depend on the shear forces, correct? Okay, so Yes. if you calculate the shear force, so shear force diagram is like this. So maximum shear force is at support, minimum shear force is shear force is Mid at the span. mid span, correct? Mid span. So this condition is there, definitely, but generally that shear reinforcement is depend on your depth also. Depth criteria is also there, correct? Yes, sir. It's means it's not depend on depth, shear force diagram. It's also depend on the depth also. Means let's say suppose if we require the maximum depth, now here we have provided only 120 overall depth. So if you go for 300 depth, so definitely we have to provide the shear reinforcement for the slab. Are you getting? Practically it is not possible, because we are reducing the span and then we are reducing the depth. Okay, another parameter we are using. समझ में आ रहा है? अगर आपको डेप्थ ज्यादा लग रही है तो वो केस में हम क्या करते हैं, स्लैब में वो केस में हम स्पैन उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पैन डिवाइड करते हैं उसमें, सो डेप्थ रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रहा है? सो जनरली ऐसा क्राइटेरिया नहीं आता है कि आपकी डेप्थ मैक्सिमम है स्लैब में, करेक्ट? क्योंकि अगर स्लैब आप मैक्सिमम डेप्थ का प्रोवाइड करें तो कंक्रीट ज्यादा लगेगा, सो अनइकोनॉमिकली रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको स्पैन में डिवाइड, इसमें बता, लेट्स सपोज मैंने ये स्लैब कंसीडर किया, लेट्स से स्लैब है आपका 8 मीटर बाय 3 मीटर, 8 मीटर बाय 3 मीटर का स्लैब है। अभी यहाँ पे आपको वन वे स्लैब प्रोवाइड करना है। 8/3 अगर मैंने कंसीडर किया तो ग्रेटर देन 2 आता है, सो वन वे स्लैब मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर ये 8 मीटर और 3 मीटर मैंने स्पैन कंसीडर किया, तो अगर मेरा डेप्थ ज्यादा जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, करेक्ट? 1 2 3 4 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो अभी कितना होगा ये स्पैन? 2 मीटर बाय 3 मीटर। समझ में? ओके। अभी स्पैन डिवाइड हो गया 3 मीटर बाय 2 मीटर। अभी मैंने एस्पेक्ट रेशियो निकाला तो कितना आ रहा है? 1.5। इट इज लेस देन 2। So now I will design this slab for the two-way slab. So dividing that into different spans. So we have to provide the beam, extra beam. Yes, but it is economical, na? Let's say suppose, for example, your slab is required 300 mm depth for this span. Maybe if you calculate, okay. So instead of total 300, you can provide 300 depth for this beam, na? One beam also. Yes, sir. Yes. One beam. It is economical. Are you getting? Yes, sir. So if such condition is there, so we can change our orientation or our slab by providing some beam. Generally,
I think you have heard about the grid slab, correct na? Grid slab. Yes, sir. Number of beams we are providing, internal beam, correct, like this, correct. So why we are doing this grid slab? Because span is maximum for your slab, span is maximum, and if you go through that total span, so obviously your depth will increase, correct. So Yes, that's sir. why we are converting that total slab to the number of slab, not the grid slab, to reduce the depth of slab. And general, whatever reinforcement, shear reinforcement, basically we are focusing on shear reinforcement, correct na? Generally, if depth is maximum, shear reinforcement is required. Okay, so how that shear reinforcement is required, that we will see, because generally for the shear reinforcement, or whether that shear reinforcement is required or not, for that we have to calculate tau c and tau c max, tau v and tau c, and tau c max also, nominal shear stress, then design shear stress, and maximum shear stress. Okay, so whatever stresses produced in your beam as per the depth, okay, or slab, that will decide whether shear reinforcement is required or not. ओके, इसलिए मैंने वो पार्ट बीम के लिए रखा था. वहां जाके आपको पता चलेगा कि जो भी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, डिजाइन शेयर स्ट्रेस है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, सो हाउ दैट स्ट्रेसेस आर चेंज एज पर द डेप्थ, इसलिए मैंने वहां पे रखा है वो. Okay, sir. Thank you. ओके ओके, एनी अदर? हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. यस सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे सर जो स्लैब हमारी कैंटिलीवर प्रोजेक्शन में कंटिन्यूअस आगे आती है, बाहर निकलती है, ओके. तो उसका सर जो जैसे हम उसमें पैरापेट रखते हैं या 4 या 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड उसके एंड पे लगता है, लाइन लोड, तो उसका जो वो है उसका सर अगर हम बीम पे लेना चाहें उसका इफेक्ट उसको बिना मॉडल करके, तो उसके लिए वो उसके लिए केवल बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे एक्चुअली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन कंफर्म करता मैं, अगर मेरा ये स्पैन है सर, स्पैन से जैसे स्लैब कैंटिलीवर हो रहा है बाहर, ये कैंटिलीवर स्लैब मैंने कंसीडर किया ऐसे, ओके, बराबर ना, ऐसे बोल रहे ना सर? ये है कैंटिलीवर स्लैब, बराबर ना? जी जी सर. ओके, अभी इसके ऊपर क्या एक लोड आ रहा है, पॉइंट लोड, जी, यहाँ पे एंडिंग पे. हाँ मतलब सर वो जो रेलिंग होती है, रेलिंग का या 4 फुट 5 फुट का वो जो पैरापेट वॉल लगाते हैं एंड में, पैरापेट वॉल, ओके ओके ओके, बालकनी में. हाँ तो सर जैसे हम जब हम इसको जैसे सॉफ्टवेयर में मॉडल करते हैं, तो अगर हम वो स्लैब मतलब हम केवल उसके शियर के लिए उस बीम पे जो उसका बेंडिंग मोमेंट आएगा कि वो कैलकुलेट करके उसको मॉडल पे स्टैट में हम अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं. जनरली हम मॉडलिंग कैसे करते हैं, वो मॉडलिंग में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका अभी मुझे लगता है कैडी ये हुआ ना, ऑटोकैड ही हुआ है ना? जी 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 ऑटोकैड ही हुआ है, ईटा बाकी है, बराबर है? जी जी जी. हाँ, तो हम क्या करेंगे पहले, ट्रेनिंग कैसे रहेगी वो बताता. अभी कैड खत्म हो गया आपका, यानी कि आपको बेसिक ड्राइंग कैसे निकालना वो पता चल गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक अभी स्ट्रक्चरल पॉइंट बेसिक सब कवर करेंगे. उसके बाद ईटैप पे जाएंगे, ईटैप बेसिक कवर होगा, और उसके बाद हम एक डीबीआर करके, डीबीआर बेसिक डिजाइन रिपोर्ट, ओके, सो वो डिसाइड करेंगे, और उसके बाद हम प्लान ड्रॉ करेंगे. जब ये प्लानिंग का आएगा ना, तब ये सब पॉइंट आपके डिस्कस होंगे कि अगर पैरापिट वॉल है तो उसका लोड वहाँ पे, उसको वहाँ पे मॉडलिंग करना है या उसका लोड कंसिडर करना है. अभी के लिए मैं इतना बताता कि जनरली हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे आप पैरापिट वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वो पैरापिट वॉल की जो भी हाइट है उसके हिसाब से लोड कैलकुलेट करते हैं, और वो लोड टोटल बीम में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए किलो न्यूटन पर मीटर, एज ए यूडीएल. तो सर उसको W into L लेंगे या उसको मतलब वो कैसे कैलकुलेट, वो क्या वैल्यू आएगी उसकी?
नहीं, डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे ना। अभी अगर हमने पैरापेट वॉल का सेल्फ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया इनटू डेंसिटी, क्योंकि आई रिक्वायर्ड लोड इन किलो न्यूटन पर मीटर, एरिया इनटू डेंसिटी। सो अभी एरिया इनटू डेंसिटी में मैं ये स्पैन नहीं कंसीडर करूंगा। लेट से अगर मेरा ये पूरा स्पैन है ऐसा और इसके ऊपर वॉल है, बराबर, इसके ऊपर वॉल है, तो मैं क्या करूंगा, हाइट कंसीडर करूंगा और उसके बाद थिकनेस ही कंसीडर करूंगा। सो एरिया में मेरा क्या रहेगा, h इंटू डी और t इंटू डेंसिटी। सो इट विल बी इन किलो न्यूटन पर मीटर। मैंने लेंथ नहीं कंसीडर किया है पूरा, क्योंकि इसके ये बीम के ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ओके ओके सर, उसका तो बेंडिंग भी होगा सर उसकी वजह से? आएगा ना, बेंडिंग आएगा ना, आएगा ना, बराबर। वो जो एंड होगा उसमें हमें फिर उसका स्टील देना पड़ेगा ना सर, उधर से जो उसकी बेंडिंग की वजह से जो स्टील आएगा। हाँ तो देखेंगे ना, देखेंगे कैसे लेना है, उसको सॉल्यूशन कैसे करना है, और डेफिनेटली स्टील कैसे प्रोवाइड करना है, कौन से कंडीशन में, ये सब देखेंगे, हम सब देखेंगे। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। जी जी ओके, सब देखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अभी थैंक यू। इसमें ओके, अभी इसमें कुछ डाउट है डिजाइन ऑफ स्लैब में? सर इसमें एक चीज है, एक डाउट और है। जब हम जैसे मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज करते हैं, ओके, तो जो एफएस की वैल्यू हम चेक करते हैं ना ग्राफ में, बराबर, तो उसमें जो अगर जैसे जो रिक्वायर्ड जो हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर डिफ्लेक्शन चेक के लिए जिस हिसाब से मतलब लिया है, वो अगर वो उससे मतलब ऊपर लाई कर रहा है एफएस की वैल्यू, मतलब अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर उससे ऊपर आ रहा है तो सेफ होता है ना? हाँ देखो, वो डिफ्लेक्शन चेक में है जी। ओके, मतलब अगर डेप्थ नहीं बढ़ाना है, स्लैब का डेप्थ नहीं बढ़ाना है, केवल उसी में रिइंफोर्समेंट बढ़ा के करना है। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखो कैसे रहता है कि कुछ कंडीशन में आपको हर बार डेप्थ ही रिवाइज करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप रेनफोर्समेंट भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ डिफ्लेक्शन चेक में गया, देखो अभी डिफ्लेक्शन चेक में यानी कि ये डिस्कस करने वाला था, मैं भूल गया मैं, बट दैट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द डिफ्लेक्शन चेक। अगर मेरा डिफ्लेक्शन चेक फेल हुआ, ओके, यहाँ पे मेरा डिफ्लेक्शन चेक अगर फेल हुआ, तो जनरली हम क्या फोकस करते कि नहीं भाई अभी डिफ्लेक्शन चेक फेल हुआ और मैंने ये जर कैलकुलेशन करते बैठा, तो इसमें मैंने डेप्थ क्रॉस चेक किया है। अगर ये डेप्थ मेरा 200 आ रहा है, required depth as per the modification factor and the basic value and span is 200, and now I have provided only 100, so it is not less than required ना। so ये केस में हम क्या सोचेंगे कि भाई मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, डेप्थ रिवाइज करना पड़ेगा। 101 तो डेप्थ मैंने प्रोवाइड किया, चाहिए मुझे 200, so मुझे डेप्थ रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, डेप्थ इंक्रीज करना पड़ेगा। वैसा नहीं है, अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस है डेप्थ इंक्रीज करने के, तो आपको इधर भी ध्यान देना है कि भाई मैं रेनफोर्समेंट का भी वेरिएशन कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैं मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट कर रहा, दैट मॉडिफिकेशन फैक्टर इज डिपेंड ऑन रेनफोर्समेंट, करेक्ट। मॉडिफिकेशन फैक्टर इज डिपेंड ऑन रेनफोर्समेंट, क्योंकि रेनफोर्स मैं मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने ग्राफ देखा, मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना हो, एज पर द एफएस वैल्यू एंड द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, करेक्ट। अगर एफएस मैंने देखा तो एफएस में भी रेनफोर्समेंट है, रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट, ओके, और परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट तो मेरी लग रही है। सो इफ आई इंक्रीज द रेनफोर्समेंट, अगर मैंने रेनफोर्समेंट इंक्रीज किया तो क्या होगा, देखो परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट मैंने इंक्रीज किया, लेट्स से हम ऐसा कंसिडर करेंगे, अभी मेरी एफएस की वैल्यू 190 आ गई, सॉरी 290 आ गई, और मैं परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कंसिडर करा 0.4, ओके, सो 0.4 के हिसाब से मेरा मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना आ रहा है, इट्स नियर अबाउट 1.19, ओके, अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करेंगे 1.19, सो नाउ हियर इट इज 1.19, ओके। बट अगर मैंने परसेंटेज इंक्रीज किया, रेनफोर्समेंट इंक्रीज किया, सो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट विल इंक्रीज, and now if my revised reinforcement or the increased reinforcement is 0.8, अगर 0.8 कंसिडर किया तो अब भी मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना आ रहा है मेरा, 0.8 है, यहाँ पे 0.1 से कम है, यहाँ पे मैं 0.9 कंसिडर करता हूँ अप्रोक्सीमेटली। Now one modification factor, if I increase the reinforcement, modification factor is 0.9, and if I decrease the reinforcement, modification factor is 1.19. And now if we see the actual formula,
मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या है? मॉडिफिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। मीन्स मैंने मॉडिफिकेशन फैक्टर इंक्रीज किया, अभी ये ध्यान में रखो, मॉडिफिकेशन फैक्टर मैंने इंक्रीज किया तो मेरा डेप्थ क्या होगा? रिड्यूस होगा, रिक्वायर्ड डेप्थ रिड्यूस होगा। मैंने मॉडिफिकेशन फैक्टर रिड्यूस किया तो रिक्वायर्ड डेप्थ क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मॉडिफिकेशन फैक्टर रिड्यूस कब होता है या लेस कब होता है? जब मैं रेनफोर्समेंट इंक्रीज करता हूँ, यानी कि रेनफोर्समेंट इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड डेप्थ आपको क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा तो? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। यस। सो हर बार हम सॉल्यूशन डेप्थ में नहीं फाइंड आउट करेंगे, sometimes we have to focus on reinforcement also. Means if you increase the reinforcement, so obviously required depth will reduce. Yes. Okay. सर सर इसमें एक केस आप आगे मतलब जब क्लास लेंगे तो आप इसमें एक केस उसका करा दीजिएगा कि जिसमें स्लैब में हम लोग उसका वॉल का लोड ले लेते हैं। स्लैब में नहीं, जनरली विदाउट नहीं जनरली हम जब मॉडलिंग भी करते हैं, मॉडलिंग का भी हम कर रहे हैं ना, मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हमने सोचा, ओके, और कैलकुलेशन के हिसाब से भी हमने सोचा, तो जो भी वॉल का लोड आ रहा है ना, वो वॉल का लोड हम डायरेक्टली बीम पे कंसीडर करते हैं, स्लैब पे नहीं। जी ओके। बट So, सर जब हम जैसे सर कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमको हमें 2 kN की जगह 3 kN पे हमने डिजाइन किया है, लेकिन वो चेंज कर देते हैं अलाइनमेंट, अंदर से बीम वो मतलब डाल देते हैं, तो उस केस में क्या है, क्या सॉल्यूशन है उसका? नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हैं आप? सर आई एम सेइंग दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर इज चेंजिंग द मींस changing the location of walls in the plan. Okay. So in case we have not provided beams over there, so how to design slab for that? No, actually see, basically as a structural point of view, okay, अगर हमने structural point of view फोकस किया तो जो लोकेशन पे आपका वॉल आ रहा है ना, वो लोकेशन पे हमें बीम प्रोवाइड करना ही है। ओके। अगर कॉन्ट्रैक्टर वैसे चेंज करता है आफ्टर डिजाइन, ओके, सो इट इज नॉट व्हाट वी कैन से, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम, बिकॉज ही हैज नॉट गिवन इंफॉर्मेशंस टू यू रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वॉल, क्योंकि जहां पे वॉल है वहां पे बीम हमें डेफिनेटली प्रोवाइड करना ही है, करना ही है। वो 4.5 इंच वॉल के लिए भी? हाँ, 4.5 इंच वॉल के लिए भी, हाँ डेफिनेटली, इंटरनल वॉल रहे या एक्सटर्नल वॉल रहे, सबके लिए हमें वहां पे बीम कंसिडर करना ही है। बीम रहना ही चाहिए, एज ए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे बीम रहना ही चाहिए, कौन सी भी वॉल रहो आप। ओके सर, मतलब इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जनरली हम जो भी स्लैब डिजाइन करते हैं ना, वो स्लैब में हम ऐसे कंसीडर करें कि ऊपर कुछ भी लोड नहीं है, उसका फ्लोर फिनिश है, सल्फेट है और लाइव लोड है, बस खत्म। बाकी के जो भी अभी चेंजेस करते हैं, इंटरनली चेंजेस करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कि भाई वॉल वहां पे कंस्ट्रक्ट करो, फिर बाद में बीम नहीं है वहां पे वॉल डाल दो, अगर ऐसे कुछ चेंजेस कर रहा है वहां पे, सो अगर वहां पे कल जाके कुछ फेलियर भी आ रहा है, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि उसने इंटीमेशन देना चाहिए। हाँ, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इट्स इलीगल कंडीशन है, यानी कि इलीगल है वो। वैसे ही हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं ना, वो डिजाइन में हम 50% मार्जिन रख रहे हैं। आर यू गेटिंग? यस सर। 50% मार्जिन बोले तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 50% इंक्रीज कर रहे हैं, बराबर है? जी। सो दैट विल बी कवर इन दैट कंडीशन, वो कवर हो जाएगा उसमें। ओके, बट इट इज इलीगल ना, ये आउट ऑफ कंसेप्ट है, बट बेसिकली रूल ऐसा रहना चाहिए कि अगर कोई वहां पे वॉल प्रोवाइड कर रहा है तो आर्किटेक्ट रहो या कॉन्ट्रैक्टर रहो, उसने आपको बताना ही चाहिए कि यहाँ पे मेरा वॉल आने वाला है। तो हिडन बीम सॉल्व कर देगा सर वो पर्पस? हिडन बीम बेसिकली देखा जाए ना, हिडन बीम ऐसा कंसेप्ट नहीं है।
वाइड बीम का कॉन्सेप्ट है ना सर, वाइड बीम डेप्थ नहीं है वाइड, लेकिन बीम वाइड है, जितनी तो दीवार है 230 mm की तो होगी वो। नहीं नहीं नहीं, हिडन बीम का कंसेप्ट नहीं। आप एक काम करो, जैसे कि हमें नॉर्मल डिजाइन के प्रोसीजर है बुक में, जी ओके, जो हम बीम डिजाइन करते हैं ना, सिंगली रेनफोर्स, डबल रेनफोर्स बीम है, जी जी जी। ओके, जे इसके जैसे प्रोसीजर है ना, वैसे हिडन बीम की प्रोसीजर दिखाओ मुझे कहाँ पे है। सर वैसे ये उसमें दे रखी है सुब्रमण्यम में, सुब्रमण्यम सर की बुक है, उस पे उन्होंने दिया है, उसमें डिफ्लेक्शन के लिए मतलब बताया नहीं है उसमें। नहीं नहीं नहीं, हिडन बीम एक्चुअली हिडन बीम कंसेप्ट ही नहीं है। हम फील्ड पे प्रोवाइड करते ही हिडन बीम, लेकिन हिडन बीम कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है वो। तो सर वो मतलब नहीं, मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो हम नहीं कर, मतलब वो गला, वो तो प्रैक्टिस में चल रहा है सर, वो तो चल रहा है ना प्रैक्टिस में, बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही जो एक्चुअल नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल बालकनी, बालकनी हम जब डिजाइन करते हैं, ओके, जी अभी आपने बोला बालकनी में हम पैरापेट वॉल कंसीडर करते हैं, बराबर है, जी लेकिन अभी लोग कंस्ट्रक्शन होने के बाद बालकनी इनक्लोज करते हैं बेडरूम में या फिर हॉल में, जिधर भी है। जी। तो एक्चुअल तो चल रहा है ना वो, लेकिन ये लीगल है या इलीगल है वो, आपको क्या लगता है, क्या है वो? सर वो तो इलीगल है सर, वो तो। वही बोल रहा मैं, कैसे कि प्रैक्टिस में तो बहुत सारी चीजें ऐसे चल रहे हैं, इलीगल इलीगल चल रहे हैं बहुत सारे। ओके ओके, ओके सर ओके। सो वैसे ही हिडन बीम का वैसे जनरली कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अभी प्रोवाइड करते हैं, क्या उसको क्या बोल सकते हो? सर अब वो उसका वही तो सर पता नहीं चलता कि क्या करना है हमें भी। अब कोई सर वो केस वैसा आ जाता है ना कई बार कि क्लाइंट बोलते हैं हमें लटकनी चाहिए नीचे। ना बीम नहीं आना चाहिए। हाँ बीम नहीं आना चाहिए नीचे। उसी उसी लिए तो फिर अभी ये एक नया सॉल्यूशन निकला है, अगर आप देखा जाए तो दो एक डेढ़ साल के एक डेढ़ साल से स्टार्ट हुआ। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या पब्लिक बिल्डिंग है, कुछ भी रहो, पीटी स्लैब प्रोवाइड कर दो। 2 साल वो तो पहले ये ट्रेंड नहीं था, जी 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 बराबर है ना। सो ये जी। ऐसी रिक्वायरमेंट की वजह से वो चल रहा है। ओके क्या करें, हमें वो थोड़ा कंडीशन वाइज चेंज होना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन कैसे है कि जो भी, जैसे मैंने अभी बताया कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैसे 50% से बढ़ा रहे, सो दैट थिंग विल मैनेज। ओके ओके। थैंक यू सर। ओके 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 थैंक यू सर। ओके। सो now it's 8:51 na. Okay, two-way slab and beam we will discuss on tomorrow, or if you are interested then I can continue, no problem. नहीं सर, कल कल ही कराइएगा अब नौ। और कल सर इन्वर्टेड इन्वर्टेड बीम का भी बता दीजिएगा सर, इन्वर्टेड बीम का वो जो यू एप्लीकेशन है। ओके, इन्वर्टेड बीम, ओके, हाँ इन्वर्टेड बीम है, हाँ ये इन्वर्टेड बीम का कंसेप्ट है। बट बेसिकली क्या होता है फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा, ओके, ठीक है, अभी जी बीम का कंसेप्ट निकला तो बताता। हम जनरली क्या बोलते हैं कि बीम अगर शेप वाइज कंसिडर किया तो दो टाइप्स के बीम है, एक रेक्टेंगुलर बीम है और दूसरा फ्लैंज बीम है, ओके। जी आइदर इट इज टी बीम और एल बीम, करेक्ट। यस बट फील्ड में ना, जब हमारे कंसल्टेंसी में भी हम वही यूज करते, जब हम डिजाइन कर रहे हैं ना, डिजाइन करते समय, सॉरी ये ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, डिजाइन करते समय ना हम बीम को फ्लैंज बीम कंसिडर करते ही नहीं, ऑल बीम वी आर कंसिडरिंग एज अ रेक्टेंगुलर बीम, पूरे बीम हम रेक्टेंगुलर बीम ही कंसिडर करते हैं। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ओके, हमें फ्लैंज बीम कंसिडर करना चाहिए फिर भी हम रेक्टेंगुलर बीम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम, डेफिनेटली ये हम देखेंगे इसमें ईटैब में। और अभी यहाँ पे निकला है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, अगर ये मेरा इंटरनल स्लैब है, यानी कि हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्लैंज बीम कहाँ पे आता है हमारा पिक्चर में, जब स्लैब सराउंडिंग में रहता है तब, करेक्ट,
अगर स्लैब सराउंडिंग में नहीं है तो उसको हम रेक्टेंगुलर बीम कंसिडर करते हैं. So generally all plinth beams are the rectangular beam and all floor beams are the flange beam, correct? Either T or L, depend on condition. Okay, but if you are considering this T beam or L beam, अगर मैंने T beam और L beam कंसिडर किया, इसका मतलब क्या कि आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपका कंप्रेशन साइड थोड़ा चेंज हो रहा है. बेसिकली देखा जाए तो हम आइडियली क्या कंसिडर करते हैं कि टेंशन शुड बी ऑन बॉटम, टेंशन बॉटम में आना चाहिए. सो बेंडिंग मूवमेंट जो भी है ना, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम बाय डिफॉल्ट ऐसे कंसिडर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर में, बाय डिफॉल्ट ऐसे कंसिडर कर रहे हैं. यस सर, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन अगर हमने फ्लैंज कंसिडर किया, ओके, तो फ्लैंज में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये डायग्राम है ओके, बट जो भी कॉम्प्रेशन साइड का ये बेंडिंग मूवमेंट है दैट शुड बी रेजिस्ट बाय योर स्लैब, करेक्ट? ओके, कॉम्प्रेशन स्लैब को, कॉम्प्रेशन पार्ट जो भी है, कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट जो भी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दे रहे हैं? स्लैब को दे रहे हैं. बट ये होगा हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपकी ऐसी हो सकती है, करेक्ट? बट प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि हर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपकी ऐसी आएगी क्या? बता नहीं सकते, बराबर है ना? वी कांट प्रेडिक्ट द बेंडिंग मूवमेंट. हाँ, थियोरेटिकली बता सकते कि ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. कभी कभी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऐसी भी आएगी आपकी, यहाँ पे ऊपर ही है और यहाँ पे नीचे गए, ऐसे भी आ सकती है, बराबर है? सो ये जो बेंडिंग मूवमेंट का एक्चुअल पोजीशन है ना, वो पोजीशन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पोजीशन चेंज होती है. इसलिए हम वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि हम डायरेक्टली क्या करते, रेक्टेंगुलर प्रोवाइड कर दो और छोड़ दो. यानी कि हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर करें कि टेंशन बॉटम में आना चाहिए. ओके, सो दैट विल बी सेफ. प्रैक्टिस में हम ऐसा नहीं करते. हम भी हमारे कंसल्टेंसी में ना, जब मॉडल करते हैं या फिर हम बीम डिजाइन करते हैं ना, सो ऑल बीम वी आर कंसिडरिंग एज अ रेक्टेंगुलर बीम इन मॉडल आल्सो, बिकॉज व्हाइल डिजाइनिंग इन आरसीडीसी. ओके, आरसीडीसी भी आपको आगे जाके सॉफ्टवेयर है. ओके, आरसीडीसी में भी एक कंसेप्ट, वहाँ पे एक पॉइंट है, टैग है कि भाई आप रेक्टेंगुलर कंसिडर करना चाहते हैं या फ्लैंज कंसिडर करना चाहते हैं. उसमें भी ये डिस्कस होगा, जो भी आरसीडीसी लेगा ना उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस होगा आपका. सर आपने अभी जो ये पॉइंट बताया ये बीम का, इसमें अगर अगर हमारी जैसे नॉर्मल बीम जो जैसे हम कंप्रेशन ऊपर लेते हैं और नीचे टेंशन लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, तो अगर हम उस बीम को उसके मतलब बॉटम से वो कर दे, बॉटम पे वो दे दें, कंप्रेशन दे दें, तो उसका जो टॉप है वो फिर टेंशन में आ जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रेसेस रिवर्स हो जाएंगे ना अगर हम बॉटम में जैसे संक स्लैब देते हैं या बॉटम बीम के बॉटम पे उसका लोड देते हैं, तो वो फिर स्ट्रेस का जो वो पैटर्न है वो रिवर्स हो जाएगा ना, ऊपर कंप्रेशन आ जाएगा, वो ऊपर. नहीं, उसके हिसाब से नहीं चेंज होता. यानी कि जो टेंशन कंप्रेशन का जो बोल रहे हैं ना आप, जी तो जी जी. टेंशन कंप्रेशन लोडिंग के हिसाब से नहीं चेंज होता, वो सपोर्ट के हिसाब से चेंज होता है. हाँ सर, वही सपोर्ट के हिसाब से ही बोल रहा हूँ. हाँ, सपोर्ट के हिसाब से, बराबर. अगर वो नीचे आ जाएगा मतलब उसमें टेंशन वाले में अगर हम वो कर देंगे उसको, मतलब वो करा देंगे. आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा, इसका मतलब सपोर्ट पे आपका बेंडिंग मूवमेंट निगेटिव है, ऊपर जा रहा है. सो निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, इसका मतलब टेंशन टॉप में है और कंप्रेशन बॉटम में. ओके, और यहाँ पे टेंशन बॉटम में, कंप्रेशन टॉप में, स्पैन पे. सर ये बिहेवियर चेंज हो सकता है, ये वाला जो आपने बनाया है ना, इसका मतलब जो कंडीशन के हिसाब से ये रिवर्स भी हो सकता है ना? रिवर्स भी हो सकता है, बराबर है. कंडीशन के हिसाब से ये रिवर्स भी हो सकता है, बट इतना भी रिवर्स नहीं होगा कि सपोर्ट में आपका पॉजिटिव आ जाए. ओके, सपोर्ट में नेगेटिव ही रहेगा शेयर की वजह से. यस यस, सपोर्ट पे नेगेटिव रहेगा, इतना भी चेंजेस. हाँ, चेंजेस किस में आएंगे? ये स्पैन में आएंगे. मे बी ये बेंडिंग मूवमेंट आपकी ऐसी भी हो सकती है, बराबर है. यानी कि टेंशन आने की वजह सम काइंड ऑफ कंप्रेशन भी आ सकता है मे बी, बट सपोर्ट पे ऑब्वियसली वो क्या आएगा, आपका निगेटिव आएगा.
टेंशन टॉप में रहेगा सपोर्ट। ओके ओके, बीम में भी वैसे हम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन ठीक है अभी हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कैसे हमारे ट्रेनिंग जो चलने वाले हैं ना आगे, ये ट्रेनिंग यस थ्योरी कंसेप्ट्स आईएस कोड्स ये जो पार्ट है वो तो इम्पोर्टेंट है, बट कंसेप्चुअली भी हम आगे जाएंगे, यानी कि एक्चुअल फील्ड में क्या होता है, थ्योरी में क्या अजम्पशंस ले रहे हैं हम, ओके वो भी डिस्कस करते करते हम आगे जाएंगे। यस हम आईएस कोड की जो भी रूल्स है वो ब्रेक नहीं करेंगे, ओके बट उसको प्रोविजन दूसरा क्या है तो भी हम फोकस करेंगे। Okay, so I will wait for 1 minute. If you have any doubt, then you can ask. Otherwise, today we will stop over here, and then from next sessions we will start our two-way slab and then beam and other elements.